and it's an honor and pleasure to be with you. Uh, I, I have a very humble background, to be honest. I've not done much, so there's nothing to be impressed or ऐसी कोई चीज है नहीं. But it was a simple, straightforward career. After, as you know, that most of us जो FSC के बाद लोग ढूंढना चाहते हैं कि किस एरिया में उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है देयर वाज ऐसी सिचुएशन होती है मेक एंड ब्रेक जब आपकी एफएससी के अंदर एक एम्बिशंस होती है. आइदर at my times engineering and medical medicine was the two options mostly everyone loved to have, but more unfortunately I could not get that. Fortunately or unfortunately, I cannot say about that, because that was a passion or ambition at that time. But switching to the new ambition afterwards, where I picked my career paths in biotechnologies, microbiologies, molecular biology, immunology. So these were the major areas which kept me so busy and attracted towards these field कि फिर मैं पुरानी सारी worries को भूल चुका था, and I just was focused. And since then, 1905 after having completing my MSc and MPhil 96 mein, in biotechnology, in biochemistry, and switching towards microbiology and clinical microbiology, environmental microbiology later on as my postdoc careers in London School of Hygiene and and medicine, and then UPenn. And prior to that, I did my PhD on Commonwealth Fellowship from University of Glasgow, and I got then a couple of scholarly fellowships later on as well. जिसमें Commonwealth Fellowship for London School का मिला, फिर उसके बाद Fulbright Fellowship for UPenn मिला. Then I had a chance to even work at George Mason University for a year or so in between. But most of my career innings was with the ComSats. I started my career in 96 from Islamic University of Bahawalpur, but for 2002 and onwards, since 2021, prior to joining this institution, I served as a faculty member, as a HOD, as a chairman, and then finally my appointment was at a director of our campus, which I left and joined this university. So I served that for about 18 years. So that was my actually a success, to be honest, where we need to work for a long time at certain organization in order to establish yourself in certain area and play a long innings consistently, where you find all sorts of challenges in one organization. It's a normal thing in Pakistan, but as long as you are stuck to your business and whatever you are basically there to deliver as a teacher or researcher, if you are doing that job in that capacity and then doing a job as admin as well, whatever you gain experience during that time is very important, and you have to deal with a lot of people, public, and on all as well as your fellow colleagues, researchers, students. So that is something which basically helps you in building your career. And whatever I am today because of my colleagues, my students, so they've also helped me to push me to that place, so I can acknowledge and give them all the credit for whatever I am today. So if that is a question you asked, so I hope I have Thank answered your question. for the insights. अभी मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैंने पीएचडी किया है और आपको भी जैसे मैंने सीवी भी अभी भेजा और आपने मेरा सीवी देखा भी और मैंने कुछ डिटेल्ड ईमेल भी आपको लिखा था, तो what would you suggest me for working in Pakistan? What steps should I take और किस तरह मुझे इसको pursue करना चाहिए? Because at the moment I don't have any mentor, that's what I would say. So I'm looking for someone who can actually be a mentor and guiding light for me in my academic career in Pakistan, not abroad. Obviously, I came back about few months ago. पाकिस्तान में आई हूँ कुछ महीना पहले, लेकिन अभी मैंने जॉब स्टार्ट किया है सर्च करना रिसेंटली, लाइक मे बी फॉर अ मंथ मैं कहूँगी, और मैंने कुछ जगह पे सीवी भी अपना ड्रॉप किया है. तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे इस सारे सिचुएशन? अच्छा, मैं पहले आपसे सवाल करना चाहूंगा, इशरत, what are your expectations and ambitions, to be honest, and you can also introduce your career path. Yeah, आपने sure, क्या sure. किया, so then we can perhaps be in more interactive dialogue to suggest anything. Yeah, sure. So मैंने
I started from Qaid-e-Azam University as well. I did my MPhil in microbiology and then, master's in biological sciences, then MPhil in microbiology and then PhD in microbiology, which is more like an interdisciplinary, my PhD topic was more of an interdisciplinary topic, which was the nanocomposite materials. So it wasn't mainly microbiology, but it was the combination of chemistry, physics, and microbiology, because I synthesized silver titanium nanoparticles for biochemical applications. So that was my PhD topic. और सर हमीद साहब जो कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, अभी वो उनकी डेथ हो चुकी हुई है जी, तो वो मेरे पीएचडी सुपरवाइजर भी थे और उसके अलावा मेरे मेंटोर भी थे, क्योंकि वो मेरे एमफिल के सुपरवाइजर भी थे और फिर मेरे पीएचडी के भी। पीएचडी में मेरा ये था कि आई स्टार्टेड फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, बट आई गॉट यूनेस्को लॉरियल इंटरनेशनल फेलोशिप, व्हिच इज हाईली कॉम्पिटिटिव एंड ओनली 15 पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कुड गेट दैट स्कॉलरशिप, और मुझे वो स्कॉलरशिप मिला था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए। वेरी नाइस। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फिर मैं गई और मेरी सारी रिसर्च एंड रेस्ट ऑफ द, आई स्टार्टेड फ्रॉम कायद-ए-आज़म, बट मैंने यहाँ पर कोई पीएचडी का मेरा काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने सारे 3 साल वहीं पे गुजारे और वहाँ पे डॉक्टर वसंत कुमार साहब मेरे पीएचडी सुपरवाइजर थे। तो इस तरह मेरे को सुपरवाइजर वो थे और मेनली मैं यहाँ से ऑब्वियसली आई वाज एनरोल्ड इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद मुझे पोस्ट डॉक ऑफर हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। So after finishing my PhD, I went on to Harvard. वहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 साल मैंने वहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, वहाँ पर मेरा पोस्ट डॉक ख़त्म हुआ एंड आई जॉइंड बॉस्टन यूनिवर्सिटी एज अ फैकल्टी मेंबर। मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया और वहाँ पर एक्चुअली माई होल दिस ट्रेजेक्ट्री इज़ क्वाइट इंटरडिसिप्लिनरी, एक सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस बायोलॉजिकल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन जब मैंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया इट वाज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो वहाँ पर फिर मैंने एक हमारी पूरी टीम थी जिसको मैंने लीड किया और हमारे पास बहुत बड़ी फंडिंग थी हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट की। तो उसमें हमने वो पूरे अपनी टीम को लेके अफ्रीका गए थे, क्योंकि द मेन टॉपिक वाज ऑन ग्लोबल हेल्थ, और ग्लोबल हेल्थ में हमने ये देखना था कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट different technologies in developing world for main challenges which developing countries are facing, mainly like we worked on malaria and maternal health. Our focus was these two things. So वहाँ पर हमारी कोलेबोरेशन थी, एक अफ्रीकन तंजानिया की एक यूनिवर्सिटी थी, वहाँ उनके साथ हमारी कोलेबोरेशन थी एंड वी विजिटेड 2 years कंसेक्यूटिवली अफ्रीका। मैंने 2 साल जब मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रही थी तो 3 महीने एक दफ़ा एंड देन 3 months अगेन द नेक्स्ट ईयर आई वेंट टू तंजानिया, और वहाँ पर हमने सारा अपना सर्वे कंडक्ट किया और सारे अपना डाटा वगैरह कलेक्ट किया और देखा कि इम्प्लीमेंटेशन इस डिवाइस की किस तरह हो सकती है। वो हम लोग हमारे स्टूडेंट्स ने एक्चुअली, जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट मैंने किया। मीनवाइल आपने मेरी सीवी में देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी सो मच विद ऑल माय ड्यूरिंग ऑल माय करियर। तो मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स और ऑनर्स मिले, जिसमें मेरा एक एशियन वुमेन ऑफ अचीवमेंट अवार्ड नोटेबल है, क्योंकि उसके लिए मुझे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इनवाइट किया था। डेविड कैमरन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन थी और वहाँ पर मुझे अवार्ड दिया गया, विच वाज एक्चुअली मेन आई वुड से, ऑल्दो कि आपने देखा है मेरी सीवी में और भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। और उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में मुझे एज अ की नोट स्पीकर भी इनवाइट किया गया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के लिए, और उस वहाँ पर भी मैंने एक लेक्चर डिलीवर किया हुआ है। और इसके अलावा मैं आइंस्टाइन यंग स्कॉलर भी रह चुकी हूँ और सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपने देखा है मेरी सीवी में। तो अब करंटली मैं पाकिस्तान में हूँ और हाँ, उसके बाद मैंने कुछ अर्सा लाइक 2-3 years I was away from academia and everything because my mom was extremely sick and I was the only carer for her. Unfortunately, she passed away recently. So sorry about that. Yeah. So obviously life goes on, and now again I want to make myself into the academia again, but obviously मेरा थोड़ा CV gap इसमें आ गया है, लेकिन I think it's okay because this is life, this can happen to anyone and I'm not the person कि अब किसी के साथ पहले हुआ नहीं है ऐसा। So yes, this is the whole thing and this is the whole academic credentials. If you have any more questions you can ask and I will be happy to answer.
Okay. Chalo, Isha, that's enough for me. As a matter of fact, now I wanted to assess basically, and mashallah, your career is very, illustrious career and much better than mine, as a matter of fact. So you don't No, have to no, worry no, it's about. not. Thank you so much for saying No, so, no, but it is. It is. It is. You must ये be. अल्लाह ताला You का must. करम है बहुत ज़्यादा। और आप जैसे टीचर्स और मेंटोर्स का साथ है, जो मैं सही कहूँगी तो इस, और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं। हमी साहब हमारे भी मेंटोर थे, दोस्त भी थे, उस्ताद भी थे, तो उनके साथ तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा. And I'm sure he groomed you well as well, and you had exposure in working in all top universities. मैं हमेशा हमेशा उनका नाम लेती हूँ हर जगह पर। आई हैड एन इंटरव्यू ऑन बीबीसी एंड आई हैड एन इंटरव्यू हियर विद मॉर्निंग विद फरा ऑन पीटीवी। तो उसमें भी मैंने इवन अपने सर का नाम लिया था कि ही इज़ द मेन एक्चुअली कैरेक्टर इन ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा अपने बच्चों की तरह समझा। और फिर मतलब एंड तक वो मेरे साथ इन टच रहे, और हर चीज़ में उनका था कि नहीं इस तरह नहीं है। एंड आई ऑलवेज आस्क हिम कि जी सर मुझे अब बताएं ये ऑप्शंस है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई एम ऑब्वियसली लुकिंग फॉर समवन एल्स कि जो थोड़ा मुझे करियर में गाइड करे, क्योंकि मेरा पाकिस्तान में अब ठीक है. दोबारा से स्टेप इन होने के लिए मुझे जी. अब मुझे 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 अब दो चीज मुझे आपकी जो चीजें जाननी है, और जिस तरह आप अपने और बाकी आपके फेलो कलीग्स which may be stuck in a similar stage and finding where to go and what to do next, and after having gained so much experience in diverse areas, so what is in it for them in Pakistan or somewhere else as well? So that's something which I wanted to frame a question. The first thing is that, which if I would have been you, जी I would have my focus objectives now. What exactly I wanted to do should be very clear for my next 5 years or 10 years. That should be an agenda, and then my decision making will be based on that. And in order to be focused, you must have a great deal of a knowledge in that area, which you do have in-depth knowledge in order to basically act and move and excel in that area. And whatever experience you have gained in that area is a plus in order to take you to the next level. So these are the few things which you have already elaborated very well. And then, if you wanted to stay here in Pakistan, you need to focus on what are the relevant challenges where you can contribute. And I'll come down to those relevant challenges where you can play a vital role. And then you have access to what sort of resources and links which are required in order to translate your relevancy into some game changer. So these are the few things which you perhaps should be focusing on. But having seen your work and all that, so you've been mainly involved in STEM जी work, basically STEM education, STEM के अंदर आपने you have been working in interdisciplinary area, you worked in microbiology, in skills आपने सीखी उसमें, and I've also had a chance to work a little bit in chemistry and nanotechnology, and then you have gone to the area where basically a global health or a one health agenda is very vital nowadays.